Lee Chatelier's principle, MCQs, question 1. Lithium reacts with nitrogen at room temperature to form solid Li3N. Three vessels of equal volume are connected by taps A and B as shown. At the start, A and B are closed. The left hand vessel is evacuated. The middle vessel has the indicated reaction at equilibrium. क्या है? N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. ठीक है. Uh, and the right hand vessel contains lithium only. ठीक है. Which actions would allow the equilibrium mixture to contain the most ammonia? Equilibrium mixture to contain the most ammonia. अच्छा. Keeping both A and B closed. तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम होगा ये. सही. B opening both A and B. अगर A एंड B खोल देंगे तो नाइट्रोजन B में जाके रिएक्ट कर जाएगी तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा तो अमोनिया कम हो जाएगी और इवैक्यूएटेड वेसल में गैसेस चले जाएंगे तो ओवरऑल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. सी ओपन ए ओनली पे गैसेस उधर मूव हो जाएंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बढ़ जाएगा एंड ओपनिंग बी ओनली जो है वो आपका नाइट्रोजन का लिथियम से रिएक्शन हो जाएगा तो इट इज़ बेटर इफ यू डोंट डू एनीथिंग. So the correct answer here is option A. Next, ammonia is produced by the Haber's process. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Delta H is negative 92 kilojoules per mole. Okay. A fault in the temperature control during the process resulted in the temperature change to 600 degrees Celsius for 2 hours. Okay. What effect did this have on the ammonia production during this time? Acha, ammonia production, since this is an exothermic reaction, increase in temperature will favor the backward reaction. So increase in temperature से backward reaction होगा. That means quantity of ammonia produced जो है वो कम हो जाएगी. But एक और चीज याद रखना. Increase in temperature increases the kinetic energy possessed by the molecules. So the reaction will take place more quickly. ठीक है. कम अमोनिया प्रोड्यूस होगा लेकिन जो प्रोड्यूस होगा वो जल्दी प्रोड्यूस होगा. तो लेट्स सी व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द अमोनिया प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम. ऑप्शन ए, अमोनिया वाज फॉर्म फास्टर. यस. इक्विलिब्रियम यील्ड डिक्रीज्ड. यस. ए इज योर आंसर. बी सी और डी में देखते हैं क्या गलती है. अमोनिया वाज फॉर्म फास्टर. यस. इक्विलिब्रियम यील्ड इंक्रीज्ड. नो. अमोनिया वाज फॉर्म स्लोअर. नो. इक्विलिब्रियम यील्ड डिक्रीज्ड. यस. Ammonia was formed slower. No. Equilibrium yield increased. No. So the correct options are present in option A. Next, nitrogen dioxide is a brown gas. Dinitrogen tetroxide is a colorless gas. An equilibrium established between NO2 and N2O4 in a closed vessel. और इक्वेशन क्या है? 2NO2 gives N2O4 and delta H is negative 57 kilojoules per mole. एक exothermic reaction है ये. And the color change that is written is brown to colorless. Which row describes the effects of changing conditions on the color of an equilibrium mixture of NO2 and N2O4? So जो equation है वो यहाँ लिख लेते हैं. 2NO2 gives N2O4. यहाँ पे colorless था और यहाँ पे brown था. Okay, now let's look at the options. Option A, increasing the pressure. अब increasing the pressure favors the equilibrium towards the side with the lesser number of moles. इसका मतलब forward side favor होगी तो color will become lighter. तो A और B गलत हो गए. C और D सही हैं. तो increasing the pressure ने हमें options A और B eliminate करवा दिए. Now the correct options will be either C or D. अब नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अच्छा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. डेल्टा एच वाज नेगेटिव और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड विद द endothermic enthalpy change. So in this case, increasing temperature will move this equilibrium in the backward direction. So when the equilibrium moves in the backward direction, the quantity of the brown color, the intensity of the brown color would increase. So options are becomes darker or lighter. So it will become
darker, which makes option C the correct option for this question. Next, the reaction between sulfur dioxide and oxygen is reversible. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Delta H is negative 196 kilojoules per mole. ठीक है. Which conditions of pressure and temperature favor the reverse reaction? Pressure and temperature. Okay. तो इसके लिए हमें ऑप्शन देखने से पहले खुद डिसाइड करना है कि क्या होता है. इसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 and 1 3. 3 moles of reactants and 2 moles of products. तो which conditions of pressure and temperature favor the reverse backward reaction. तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करने के लिए जो है वो लोअर प्रेशर की जरूरत होगी. प्रेशर हैज टू बी लो. सो ऑप्शंस ए और बी गलत हो गए. सी और डी ऑप्शन जो है वो सही हैं. आप टेम्परेचर की बात करते हैं. बैकवर्ड रिएक्शन मूव करना है. फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. So increase in temperature favors the endothermic side of the reaction. So an increase in temperature will favor the backward reaction. So temperature has to be high, not low. Option C is the correct option for this question. Next, in a particular reversible reaction, the yield of products is increased if the temperature is increased, if the pressure is decreased. Which equation could describe this reversible reaction? Okay, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं क्या. The yield of product यानी equilibrium moves towards the right if temperature is increased. का मतलब reaction has to be endothermic. ठीक है ना. Reaction has to be endothermic. जब भी ये forward direction में favor होगा. If the pressure is decreased, pressure decrease होगा तो number of moles of products should be greater than reactants. So products के moles ज्यादा होंगे. ऑप्शन ए रिएक्टेंट्स 2 हैं, प्रोडक्ट्स 4 हैं और एंडोथर्मिक है. ज्यादा प्रोडक्ट्स और एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ऑप्शन बी सी डी में देखते हैं किस बेसिस पे एलिमिनेट हुआ है. बी और सी दोनों के डेल्टा एच नेगेटिव हैं तो इस वजह से और चेक करने की जरूरत ही नहीं है. डी में पॉजिटिव है तो अब हम मोल्स देखेंगे. 3 moles of reactants and 2 moles of products. Products are lesser than the reactants. इस वजह से बाकी तीन ऑप्शंस गलत हैं. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. Next, hydrogen is produced industrially from methane as shown in the equation. CH4 gas plus H2O gas gives CO gas plus 3H2 gas. Delta H is positive. Which conditions would favor the formation of hydrogen? Formation of hydrogen का मतलब which condition would favor the equilibrium to shift towards the right? अब pressure और temperature है. Endothermic reaction है तो high temperature would favor the reaction to shift towards the right. So A and C will be the correct options. राइट इनमें से कोई सही होगा. और दूसरा क्या है? प्रेशर. फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 and 1 4 हैं और रिएक्टेंट्स 2 हैं. ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की साइड अगर फेवर करनी है तो प्रेशर को कम करना होगा. तो ऑप्शन सी हैज द लोअर प्रेशर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, nitrogen and hydrogen can react together to form ammonia. The formation of ammonia is exothermic. The rate and yield of the reaction can be altered by changing the conditions under which the reaction is carried out. Which row shows how the effects of adding iron to the mixture and increasing the temperature? Adding iron to the mixture से इन्होंने क्या बोला है? The rate and yield of the reaction. So adding iron has no effect on the yield at all. It increases the rate of reaction, yes. So has no effect on yield, correct. Increases equilibrium yield, wrong. Increases equilibrium yield, wrong. Increases the rate, yes. That is what a catalyst does. अच्छा, इन तो ऑप्शंस ए या डी में से कोई सही ऑप्शन होगा. अब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल डिक्रीज द यील्ड. तो ऑप्शन ए सही लग रहा है. Or option D has no effect on the equilibrium yield. No, definitely increase or decrease in temperature will shift the equilibrium to the left or the right. So option A is the correct option for this question.